Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on Know Your Text series part 13, and today we will read the second chapter, the summary of the second chapter of A Portrait of the Artist as a Young Man. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Brishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature four times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 2 years of teaching experience. Moreover, I have also topped in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. Good evening, Ektaba. Welcome. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. These are the timings of your classes: Monday to Friday at 8:30 p.m., Saturday, Sunday off. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notified. Okay, so let's start. In yesterday's class, we have started discussing the summary of James Joyce's A Portrait of the Artist as a Young Man, and we have completed the summary of chapter 1. Today, we will start from chapter 2, published in 1916, Portrait of the Artist as a Young Man. Today, we will start from chapter 2. Good evening, Papdi. Welcome. Okay, so let's start. In yesterday's class, we have found that Stephen was in deep fever, acute fever, because his friend Wells threw him into the ditch. तो उसका एक एपिसोड था एंड उसके बाद हमने देखा कि एक पॉलिटिकल अपीवल्स के बारे में वो बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट दांते, हिज सॉरी हार टू ब्रशेस. तो इस ये कुछ बारे में बात हुई है. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 से. गुड इवनिंग पापड़ी, गुड इवनिंग पूजा, वेलकम. So in chapter 2 we have found that Stephen Dedalus spends his summer vacation in Blackrock with his uncle Charles. Stephen spends his summer vacation in Blackrock. Blackrock is the name of the place. With his uncle Charles. चार्ल्स के साथ इंट्रोडक्शन हुआ था हमारी कल की क्लास में. चार्ल्स एंड दांते के डांस परफॉर्मेंस के बारे में स्टीफन याद कर रहे थे, तो वही चार्ल्स. तो his uncle Charles वो spent कर रहे summer vacation and they spent it very beautifully. After the day's works, they go to meet Mike Flynn, a retired athletic trainer. एक कोच था, ठीक है, स्पोर्ट्स का एक कोच था. तो माइक फ्लिन के साथ वो लोग मीट करते जाते थे एंड माइक टीचर्स स्टीफन how to run and all the other athletic skills. Mike teaches Stephen how to do that. So Stephen actually becomes a regular student under the uh, guidance of Mike Flynn. In the evening, they visit the chapel for prayer. In the they means Charles and Stephen. तो ये उनका almost एक daily routine बन गया था कि throughout the day Stephen and Charles they will work in various parts and workings मतलब various kinds of jobs वो लोग करते थे. And after the day's work, evening time में afternoon time में वो लोग माइक फ्लिन के पास जाते थे and Stephen learns how to run there. And then in the evening they visit the chapel for prayer. Good evening Gitu, welcome. Stephen listens to the discussion on politics. अब ये सब तो चल रहा था, उसके बीच में ही पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ बातें स्टीफन सुन रहे थे एंड दैट वाज हिज डेवलपमेंट, हिज रियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. एंड जो लास्ट क्लास में हमने बताई थी कि स्टीफन कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल were creating debates among themselves because all of them loved Ireland so much, their own motherland. तो अगर सबको मदरलैंड इतने प्यारी है तो वो क्यों ये सारे डिबेट क्रिएट कर रहे हैं. तो ये स्टीफन का समझ में नहीं आ रहे थे, बट he realizes that politics is a very important part of daily life and day to day काम के दौरान ही उनको कई सारे डिस्कशंस सुनने को मिलता था ऑन पॉलिटिक्स. गुड इवनिंग प्रसन्नजीत, वेलकम. In the evening, he reads The Count of Monte Cristo.
It is a very famous novel written by the French writer Alexander Dumas. अलेक्जेंडर डूमस, जिन्होंने थ्री मस्केटियर्स लिखा था, वही अलेक्जेंडर डूमस, द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो. So Stephen comes across this novel, and in the evening he reads this novel every day, The Count of Monte Cristo. Now, while reading the novel, Stephen, as you all know, he is an imaginative boy. He is very much he has very much artistic sensibility. तो स्टीफन के मन में वो एक दुनिया उन्होंने बना लिया था विद द कैरेक्टर्स ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो. ठीक है, काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो. तो स्टीफन फॉर्म्स एन एडवेंचरस क्लब. मतलब क्लब का नाम ही कुछ ऐसे था, एडवेंचर्स क्लब. क्लब का नाम ही था एडवेंचर्स क्लब. ही हैज फॉर्म्ड दैट क्लब along with his friend Aubrey Millis. Aubrey Millis. Now they fight imaginary battles with costumes. अब costumes तो हर एक character का अलग अलग है. But Stephen has kept a fixed costume, the costume of Napoleon. You all have seen the image of Napoleon in your history book. तो Napoleon का जिस type का dress था, Stephen ने बस उसी dress को universalize कर दिया कि जो भी fight होगा सब लोग नेपोलियन के जैसा ड्रेस पहनकर फाइट करेगा. एंड इट वाज इमेजिनरी फाइट्स बिकॉज स्टीफन मतलब ये नॉवेल पढ़ते हुए एडवेंचरस जर्नी में उन्होंने मतलब वो अपने ही माइंड में एक चीज क्रिएट कर रहे थे, एक नया वर्ल्ड वो बना रहे थे. So they fight imaginary battles with costumes. They means Aubrey, Stephen, and the other members of that club. Now, while fighting, Stephen one day watches the scene of milkmen and cows. It saddened. It's it saddens him very much. Why saddens him? Because he is again lost in some other thoughts. He is getting distracted. स्टीफन बहुत जल्द ही डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं. ये हमने लास्ट चैप्टर में ही देखा. ठीक है, बहुत आसानी से मतलब वो बात कर रहे हैं किसी के साथ एंड ऑटोमेटिकली ही गेट्स डिस्ट्रैक्टेड. इन द क्लास ऑल्सो ही गेट्स डिस्ट्रैक्टेड बाय सो मेनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स. So the scene of the milkmen and the cows also saddens him. Okay, and जब वैकेशन खत्म हो गया, स्टीफन डज नॉट रिटर्न टू द स्कूल. बाकी उनके सब फ्रेंड्स लौट गए, बट स्टीफन डज नॉट रिटर्न. And he imagines the life of a milkman. That thing impresses him a lot, and he longs for such a life, such a peaceful life, which anyone craves to lead. But Stephen, उनका भी मन में बहुत मन हो रहा था to live the life of a milkman, but his sense of ambition prevents him to imagine the same. Here comes the class hierarchy, caste distinction, because milkmen, they are of the low caste family and Stephen belongs to a high Catholic family. So वो इस फैमिली पे रहते हुए ये इमेजिन नहीं कर सकते कि वो अल्टीमेटली एक मिल्कमैन बने. Right? This should not be his ambition. So he longs for such a peaceful life amidst the surroundings of nature, but his sense of ambition prevents him to imagine the same. He loves to be separated from everyone else and dreams of finding a world according to his soul. So Stephen realizes that the whole world is against his sensibility, and that is why he always recoils from the real world and he tries to create a world which is made with his own imagination, inside his own imagination, and he loves to roam about in that particular world. तो ये स्टीफन का मेंटालिटी है, वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं. he loves isolation. तो वही बात कह रहे हैं कि he loves to be separated from everyone else and he has created his own dream world. वही उनका अपना एक रेस्पाइट है अपने लाइफ का. yes yes papi, like Amol wanted to be doi wala in dark fur. Yes, absolutely. So Stephen watches the watchman carrying away most of the furniture. अब यहाँ से एक दूसरे, जैसे मैंने बताया कि इट इज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, तो थॉट प्रोसेस इज नॉट सेम. अभी वो मिल्कमैन के बारे में सोच रहा है, अभी वो ये देख रहा है कि एक वॉचमैन वो अपने सारे सामान कैरी करके ले जा रहे हैं किसी दूसरे जगह, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर. एंड एक्चुअली में क्या है, the watchman decides to move to Dublin with his family due to financial trouble. वो किसी और जगह में था, वो डबलिन में शिफ्ट कर रहे. ठीक है,
बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो जब वो घर चेंज कर रहे तो ऑटोमेटिकली सामान भी वहां पर ले जाना होगा। तो ही इज चेंजिंग हिज एड्रेस, ही इज शिफ्टिंग द हाउस and he is going to Dublin. Now, when he comes across the financial trouble of the watchman, then he reminds of his father, who is also financially very irresponsible. He realizes that his father is also indifferent to monetary status. And the whole world appears to be very gloomy, dirty, and empty. Stephen cannot find any ray of hope, and he is completely disillusioned. ठीक है, ये दुनिया में क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी लाइफ हमें जीना चाहिए? Stephen is in great dilemma. Yes, Papi, this is very true. Child psychology is mostly like that, which finds greatness and happiness which elders consider as inferior. Yes, and this is the general tendency of every children to avoid or to go beyond the instruction of the adult. मतलब एडल्ट लोग जो चीज को मना कर रहे हैं वो उसी चीज के बारे में ज्यादा फोकस करेगा। ये तो ह्यूमन नेचर है, बच्चों का ये नेचर है। तो स्टीफन का भी सेम नेचर है। यस, नाउ स्टीफन एक दूसरे जगह में जा रहे हैं। स्टीफन गोज टू विजिट हिज आंट विथ हिज मदर। Okay, then he also goes to attend a children's party, which annoys him because Stephen doesn't like so many noises, so much of rhythm, dancing, fighting with each other. ये चीजें उनको पसंद नहीं। तो वो बहुत शांति से रहना पसंद करते हैं। एंड पार्टी मीन्स इट इज नॉट अ पीसफुल प्लेस, राइट? उसमें कई टाइप्स का साउंड्स आते हैं एंड इट क्रिएट्स ऑलमोस्ट अ कैकोफोनी। So he is very much disturbed and annoyed with the and children's party। आप सोचो बच्चे एक साथ कितने सारे शोर मचाते हैं, तो उनका पार्टी आप समझो कि क्या हाल है उस पार्टी। So it annoys Stephen very much. Now when he is coming back from the party, he meets another girl named Emma, and उसको नॉवेल में लिखा गया है ऐसे EC, ठीक है? तो एक्चुअली उसका नाम है एमा। ही मीट्स अनदर गर्ल नेम्ड एमा एंड टेम्प्ट्स टू caress her but cannot। so he's automatically his desire for the youth, his desire for beauty grows up, and he wants to just touch and caress the girl but he cannot do so। अब वो क्यों ये कर नहीं पा रहे हैं? दैट इज द repression of society, that is the repression of religion, because he is a very uh, he is from a very prestigious Catholic family, so he cannot do that kind of immoral thing on the road। ठीक है, तो ये उनको प्रिवेंट कर रहे हैं। तो इट इज एक्चुअली फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। ओके, तो अनकॉन्शियस माइंड में डिजायर है, मतलब इट इज instigating Stephen to caress the girl, but super ego is saying that no, you cannot do so। So he recoils from that thing। Now Stephen falls in love with that girl। It is not only love, but it is a kind of youthful infatuation, you may say। Stephen tries to compose a romantic poem on her using words like moon and wind। तो ये उनको पता है कि रोमांटिक पोएट्री में हमेशा कुछ हाइपरबोलिक कंपैरिजन होते हैं। The beloved's face is like the moon, the skin color is like that of a rose। तो ये सारी चीजें होते हैं एंड लव सोनेट्स में भी हमने देखा। तो स्टीफन को ये पता है, तो वो एक पोएट्री लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जनरली एल्यूशन टू मून एंड विंड कम्स। अब अचानक नॉवेल शिफ्ट करता है दूसरे जगह में। स्टीफन हैज ग्रोन अप। स्टीफन इज नाउ 16 एंड नाउ ही इज अ स्टूडेंट ऑफ बेल्फिडेयर जेसुइट स्कूल। बेल्फिडेयर इज द नेम ऑफ द प्लेस जहां पर ये स्कूल है। तो स्टीफन इज अ स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल एंड ही इज अवार्डेड एज द सेकंड बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। उनको एक प्राइज मिला है। नाउ आफ्टर दैट स्कूल में एक ड्रामा कंपटीशन हो रहा है, एक ड्रामा परफॉर्मेंस, नॉट कंपटीशन, एक परफॉर्मेंस हो रहा है। And Stephen has given the role of a stern and foolish teacher in that school play। Stern and foolish teacher, because according to the teacher, Stephen is very much serious, and Stephen is posing that he is more mature than he seems to। तो इसलिए उनको टीचर का रोल दिया गया, एंड वो भी कैसे टीचर है, बहुत ही स्ट्रिक्ट बट वेरी फुलिश। तो एक फनी कैरेक्टर, ठीक है? तो दैट काइंड ऑफ अ रोल इज गिवन टू स्टीफन इन अ स्कूल प्ले।
Now he is ready with all his makeup. While waiting for backstage, he feels disgusted with all the noises because he has a serious aversion to the noise. So he feels very much disgusted and he watches the muffled noise of the theater from a distance. वो वहां से कई दूर जा रहे हैं, थिएटर से बहुत दूर, एंड वो मतलब बहुत दूर में जाकर ही इज ऑब्जर्विंग द थिएटर, ऑब्जर्विंग द लाइट्स ऑन द थिएटर, एंड देयर ही इज वाचिंग ऑल दीज थिंग्स. हिज इमोशन ओवरफ्लोज विथ म्यूजिक. Which music? The music which are part of the drama performance. Okay. Next, what happens? Stephen's friend Heron, है मतलब ये उनके अनकॉन्शियस, सॉरी, उनके जो कॉन्शियसनेस है वो शिफ्ट कर रहे हैं किसी दूसरे पोजीशन. तो स्टीफन रिमाइंड्स दैट हिज फ्रेंड हिरॉन इन्फॉर्म्स हिम दैट हिज फादर हैज गन टू द स्कूल विद अ गर्ल, एंड हिरॉन सस्पेक्ट्स दैट that girl can be or may be Stephen's girlfriend. तो गर्लफ्रेंड मीन्स दैट गर्ल, ई सी जिसका नाम है, दैट इज इमा. तो स्टीफन feels very destabilized when his friends talk about his own private life. So Stephen tries to mock his friends so that they can stop their discussion or gossip. But as a result, they also mock him for his secret relationship. तो जैसे फ्रेंड्स लेग पुल करते हैं वैसे. Now they are trying to instigate Stephen more. So they know that Stephen is a great fan of Byron, Lord Byron. But the but his friends are telling that no, Byron is a very bad poet. He is a hedonist. He is a heretic. तो उनका पोएट्री क्या, वो तो मतलब पोएट्री से, पोएट से ज्यादा भी वो एक नोटोरियस एक गुंडे हैं. But Stephen loves Byron very much, and you can understand why. Because Byron wrote so many adventurous poems like Don Juan and others, and Byron की poetry ना थोड़ा बहुत अलग है. अगर हम romantic poetry की बात करें तो it is very important to know that Byron is a very notorious romantic poet, and he is not in that sense a romantic, the sense in which we call Shelley, Keats and other poets are romantic poets. Byron is much rebellious, much outspoken in nature. तो कई सारे critic ने उनको criticize भी किया है कि he is very bold among all the other, among all the other things, sorry, among all the other important romantic poets. So Byron stands apart. स्टीफन हैज अ ग्रेट फैसिनेशन फॉर बायरन, बट उसके दोस्त उनको इस टाइप से मतलब लाइक पुल कर रहे हैं कि बायरन वो तो एक हेरेटिक है, वो बहुत एक मतलब इनफेमस पोएट है, उनका पोएट्री कोई नहीं पढ़ते. ठीक है. तो इस टाइप का एक आर्गुमेंट चल रहा है. नाउ एक दूसरे बात चल रहे हैं. द टीचर एक्यूजेस स्टीफन फॉर राइटिंग हेरेटिक थॉट्स इन एन एसे. Actually, Stephen is putting the thoughts of Byron into an essay, and it is not properly accepted inside the school campus. So the teacher accuses Stephen for that. अब ये सारी बात स्टीफन सोच रहा है. Then a boy comes to call Stephen for his role. प्ले तो चल रहा है स्टेज में एंड स्टीफन को कोई ढूंढ नहीं पा रहे, तो थिएटर से एक बॉय आते हैं एंड स्टीफन को वो लेकर जाते हैं कि भाई इसके बाद तुम्हारा रोल है तो कर लो, सबसे पहले आप क्या सोच रहे हो यार. So after finishing the performance, Stephen comes out of the stage but finds no girl waiting for him. Stephen confuses the past with the present. You can realize that, right? And instead of finding any girl, he looks at the morgue across the street and breathes of smell of urine. तो एक ईरीनेस उनके माइंड में क्रिएट हो रहा है, डिस्गस्टिंग फील. देन दूसरे सीन में दिखाया जा रहा है कि स्टीफन इज गोइंग टू कॉर्क विथ हिज फादर. Why? Because his father is in search of some of his friends, and he comes to know that his friends are going to auction their property. तो उस ऑक्शन में प्रेजेंट रहने के लिए स्टीफन के फादर, दैट इज साइमन डेडेलस, स्टीफन को साथ में लेकर कॉर्क में जा रहे हैं. एंड ड्यूरिंग द जर्नी ही रिमाइंड्स हिज यूथफुल एक्साइटमेंट. He means Stephen. Stephen reminds his youthful excitement, so different from the present disillusion. He is trying to contrast his past experience with the present. Next क्या है? He tries to pray but can only pray to the sounds of train wheels. This is very important. Train का imagery हमने पहले भी देखा था कि the sounds of train very much create enthusiasm inside the mind of Stephen, because train
एक ऐसा चीज है जिसके साथ आप घर जाने की बात कनेक्ट कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो ट्रेन का सिंबल है अगेन इन दिस चैप्टर। तो स्टीफन ट्राइज टू प्रे टू गॉड बट वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, रादर ही इज ओनली प्रेइंग टू द साउंड्स ऑफ द ट्रेन व्हील्स। Okay. After breakfast, his father tries to find out which of his old friends are alive. So they have arrived at Cork, and next day, next morning, उनके father ढूंढने जा रहे हैं कि कौन कौन से उनके ऐसे दोस्त हैं जो अपने प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर। So Stephen also goes with him, but while leaving the hotel, Stephen sees the word "potus" cut into the wood and it haunts him. इसके साथ एक चाइल्डहुड मेमोरीज कनेक्टेड था, ठीक है। वो स्कूल में भी ये वर्ड देखा था एंड इस होटल में भी वो ये सेम वर्ड देख रहे हैं एंड इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ a destabilizing impact on his mind. Stephen feels that he is cut off from the reality. Reality is something different, and he can remember only his childhood names and facts, not any feelings. अभी ये सारी बात को सोच कर उनको ये लगता है कि चाइल्डहुड मेमोरीज दे आर जस्ट फैक्ट्स, उनके साथ कोई इमोशन जुड़ा हुआ नहीं है। एंड नाउ स्टीफन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन, अ डिफरेंट यंग मैन। So the childhood appears to be dead. His childhood self appears to be dead to him, and which is very painful for him because he cannot relate his childhood memories with the present one. He is completely disillusioned. तो एक मतलब टाइम का गैप क्रिएट हो रहा है उनके अपने ही एक्सपीरियंसेस के बीच। Now, after selling his property, Simon drags Stephen from bar to bar. साइमन ने तो बेच दिया अपने सारे प्रॉपर्टी ऑक्शन हाउस में एंड देन साइमन बिकम्स अ ड्रंकर्ड मैन। वो जितने भी बार्स में जा रहे हैं स्टीफन को तो उनके साथ जाना ही होगा, ठीक है। स्टीफन भी जा रहे हैं एंड देयर स्टीफन एनकाउंटर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर which is not acceptable in society, that is the culture of the prostitute. And there Stephen feels very much disgusted with the smell of the wine. Stephen feels that his only true emotion is lust. एक ही इमोशन उनके दिमाग में काम कर रहे, that is bodily desires. And Stephen grows very immoral in that way. He remembers lines of Shelley's poem describing similar feelings, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दूसरे जगह में जा रहे हैं और पास्ट में स्टीफन रिसीव्स, एक सेकंड, यस। तो ही स्टीफन अब एक और पास्ट जगह पे जा रहे हैं जब स्टीफन एक स्कूल चीज था, वो एक स्कूल बॉय था। तो स्टीफन रिसीव्स 33 पाउंड फॉर हिज एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो एकेडमिक्स मतलब स्कूल लाइफ में वो फिर से जा रहे हैं। नाउ ही इज अ ग्रोन अप बॉय, but he is remembering his school days where he at first he was awarded as the second best student, then he received 33 pounds for his excellent performance in academy. He wastes the money by buying foods and theater tickets. He becomes very hedonistic, ठीक है। बट वो इतने सारे कॉस्टली चीज खरीद रहे हैं बट स्टिल ही फाइंड्स नो सोलेस, रादर ही फील्स मोर एंड मोर एलियनेटेड फ्रॉम हिज फैमिली। इस मतलब अवार्ड को जीतने के बाद भी वो कनेक्शन क्रिएट नहीं कर पा रहे विथ हिज फैमिली एंड इट इज वेरी मच प्रॉब्लमेटिक फॉर अ चाइल्ड, right? He longs for his family, he longs for be with his family, be close with his family, but he cannot do so. He the more he is trying to get closure, the more he is alienated from his family. Okay, अच्छा। नेक्स्ट क्या है, स्टीफन wanders through the street। मतलब उसके दिमाग में कुछ ऐसे चीजें चल रहे हैं, वो किसी भी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, so he wanders aimlessly, there is no particular place. He recalls Mercedes' lover of from the novel. Novel means the Count of Monte Cristo. उसमें Monte Cristo का जो beloved है उसका नाम है Mercedes. So he recalls that beautiful lady Mercedes, and he is constantly tormented by lust and strange visions. It is very disturbing for a child because he doesn't know the world of sexuality right now, but still he feels lust inside his body, and he doesn't even know that it can be called a lust.
एक ऐसे सिचुएशन में he is just a young boy of 16, so he cannot control his bodily desires and he visits prostitutes and gets intimate with one of them. Now this is Stephen's first immoral act which he does in a heat of the moment. Now during that intercourse or during that intimacy, the whole world appears very dark to him. The whole world appears very dark to him. Conflict between body and soul. Body wants satisfaction, but soul wants to receive. That kind of conflict is there in Stephen's mind because his body is trying to enjoy the another woman body, but his soul is saying that no, you are doing something immoral. The conflict between rationality and conflict between unconscious and conscience. ये एक बैटल चल रहा है स्टीफन के माइंड के अंदर, ठीक है. तो इट इज देयर इन द सेकेंड चैप्टर. तो इससे सेकेंड चैप्टर एंड होता है विद द इमोरल एक्ट ऑफ स्टीफन. Okay, so we have completed two chapters. In the next class we will do the third chapter. Okay, so that is the end of today's class. Thank you all for joining. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And these are the timings of your classes: Monday to Friday at 8:30 p.m., Saturday, Sunday off. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notified. So we will meet again tomorrow at 8:30 p.m. with the summary of chapter 3. So thank you for your time. Bye bye everyone. See you all tomorrow at 8:30 p.m.